So students, to study physics, I told you that class 11th and 12th, take them as one combined course. Don't treat 11th and 12th separate. Let's say one combined course. So your 12th class has started. Okay. So this journey which started here, and it will end when you will give your board exams and when will you give your entrance exams for different colleges. So this whole journey, 11th and 12th, so it has started. Okay, so you are going to make your future now, depending on what interest you people are showing. Okay, so to study physics we need to learn two basic mathematical tools, and those tools are calculus and vectors. So vector algebra basically. So calculus, you know that we can have two physical quantities and the relation between them we are plotting on the graph, and we got a curve which is depicting their relationship, and to find the slope at any point of that graph we need differentiation, and to find the area under the curve we need integration. So differentiation and integration, we are definitely going to need them. Now physical quantities are of two types, scalars and vectors. Scalars are simple, like see, the temperature in the morning was suppose 28 degrees Celsius, and it has increased and reached by 34 degrees Celsius now. So simple, we are adding them like we are adding simple numbers. We have done that. I have traveled 4 meters this distance and then 7 meters this distance. So the total path length I have traveled is 4 plus 7, 11 meters. So the mathematics that you have studied till class 10th, you were dealing with scalar quantities only. So the algebra that you have studied till now was related with scalars. Now my question is, suppose you have a big ship. This is your ship, and students, when this ship reaches the harbor, it has to switch off its engines. Okay, otherwise there will be huge waves. So it has switched off his engines and he has to reach here on this harbor. So what happens is that we will have two tugboats, two small tugboats, and these tugboats are pulling this ship. So it is applying, suppose, force F. It is also applying force F, and there is angle of 120 degree between these two forces. So where will be the ship move, and what will be the net force acting on it? So to do this, to solve this problem, see, this is a genuine thing. So you have to tell me the net force. So suppose this force is, it can be 10 to the power 3 Newton, suppose, and this also 10 to the power 3 Newton, 1000 Newton. So tell me the net force. Will the net force be 10 to the power 3 plus 10 to the power 3 like we are adding here? So will it be 2 into 10 to the power 3 Newtons? Will it be like this? And what will be the direction of this net force? So this is not going to be the net force. This will be the net force when both the forces are acting in the same direction, 10 to the power 3 Newton and 10 to the power 3 Newton. Then the resultant will be 2 into 10 to the power 3 Newton. But if there is an angle of 120 degree between these two forces, then what will be the net force?
So to deal with how to add the forces, how to add the vectors. So force is vector quantity. So for that we need vector algebra. Vector algebra, like in algebra, you deal with variables, and with variables you do how to add the variables, how to subtract the variables, how to multiply the variables. Similarly, in vector algebra you will learn how to add the vectors, how to subtract the vectors, and how to multiply the vectors. So only this thing. So rules of adding, subtracting and multiplying the vectors is a vector algebra. So these are the two things that the basics you need for to study physics is. First is calculus and second is vector algebra. So then we can start the journey to learn the physics. Okay? So those who have missed my earlier classes, please watch my earlier videos in which I have explained differentiation and integration in the last two videos. So they are uploaded on my channel, YouTube channel. You can subscribe that channel. So learn physics and maths. And I will also upload this video this video of this lecture. So you can see the previous videos also if you have missed my videos. So students, please watch them and pause the video, write. So write simultaneously. Just watching it like movie is not going to help you. And here also I am expecting you people have written everything what I have written on the board. Okay. So you have understood how important for us to learn how to calculate the slope, how to calculate the area under the curve, because we are going to deal with variables, and the vectors, quantities, how we are going to add them, subtract them and multiply them. So do you think that there is need to learn vector algebra, vectors, addition? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So like when we study numbers, we study what kind of numbers do we have: whole numbers, natural numbers, integers, rational numbers, irrational numbers, real numbers. So similarly to study vectors also, like see, when we started teaching you mathematics, we told you that 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so like 4, and then so we write it as 5 like this, and there were beats also, 1, 2, 3, 4, 5. So 5 beats, right? So we have told you some way how to write these scalar quantities. Now how to write these vectors? So now there is a skill, just like we draw graph. Yes, graph has a skill. Yes, like even if you see Google graph also, there is a scale at the bottom. That scale can be like 100 meters is equals to 1 meter on the graph, or there can be 1 kilometer is equal to 1 centimeter. If you are looking at the bigger view, so we have a scale, just like for the maps we have, graphs we have. So similarly we have scale also for the vector. Suppose I want to show 10 Newton. So for 10 Newton I have to draw this line. So what is the scale of this line? Let 10 Newton be 1 centimeter. So how much this is? Suppose 6 centimeter. So it means I am describing here how many newtons? 60 newtons of force, right? Yes? Yes, sir. So this is the magnitude of the force that I am drawing here. So I have a force whose magnitude is 60 Newton. Now what is the direction of that force? Direction of that force is along x-axis. So this force along x-axis. So I have drawn this magnitude, which is 60 newtons, which is 6 centimeter, is depicting 60 newtons here, and then the direction. Direction is along x-axis. So that's my x-axis. So this is 60 newtons and this arrow. Now I want to show 60 newtons
30 degree from x-axis. So this is x-axis and this is my 60 Newton. So the length will remain same, right? Because this is 60 Newton, but the direction is different. So there is an arrowhead, you can see. This is an arrowhead, which is telling you the direction. Yes. So have you understood? Because vectors has magnitude as well as direction. So vectors are represented by arrows. What they are represented with, students? Arrows. Length and an arrowhead. So from ray you can say. So vectors are represented by a ray. So this is a ray, and so there is an arrowhead. Yes, this arrowhead. So this is line, and part of it line segment, and the ray starts from one point. Yes, so this is ray, right? This is line, this part of line segment. So students, we represent vectors by ray, and there is an arrowhead, right? Is it okay, students? Yes, sir. Yes, sir. So like if we are representing this vector, so this was the magnitude, and if we are representing at full, how do we need to write it? This vector f, so in your book it will be written as this bold letter f, the vector quantities, like this, okay? But here in your notebooks you will write the vector and then place an arrow over it. So place an arrow over the letter, okay? Like you want to represent velocity, so velocity, and then place an arrow, okay? So that's vector quantity. Is this okay, students? And in your book, how will this be written? Bold letter. Yes, like this, okay? Now understand very simple thing. As I told that this vector, when you are making this arrow, it means equals to, this is vector, okay? So you have to write here direction as well as magnitude, okay? So if you want to write for this force which is acting along the x-axis, so we'll write here force that is equals to 60 Newton along x-axis. Is this clear, students? Now, sir, I want to write only magnitude without direction, okay? So you will write only this. So place a modular sign or two vertical lines. So that is telling you only magnitude, or you can write it only with F. So you will find three notations. First, this letter with the arrowhead, second this, and third this. So there are only three notations you will find. So these two means only magnitude, okay? And this first one means magnitude and direction. So that's vector. This is magnitude of the vector, these two. So this is magnitude only. But here if you are writing this notation, then you have to write the direction also along with magnitude. So vector, magnitude, and direction. Is it okay, students?
Yes, sir. Okay. So now suppose I have a point over here, okay, and I want to locate this point. I want to locate this point, this x-axis and this y-axis. So students, whenever you have x-axis and y-axis, xy plane, so it means you are telling the location, position of the body, okay, you're telling the position of the body. Is this clear? Whenever you have a x-axis and a y-axis, okay, and these points are, Cartesian coordinates, x and y coordinate. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So remember, when we were studying motion in a straight line, the first thing that we wrote there was origin, and then how to locate this point. Suppose it was point P, so this was 0, and this was, suppose this distance is 60 meters, so 60. Yes. So here, how do we locate this point? So if this point here is xy, there we only need x coordinate on the x-axis in the straight line. But here, now it's a plane. So in plane, to tell the location, we need two coordinates, x and y. And to reach this point, I have to move along the x-axis x units, and then along the y-axis y units. Is this okay, students? Yes, sir. Good. Now, so I have a particle over here at point P. So, particle P is located in a plane xy plane. You need not to write A then. Is located in an xy plane with coordinates P xy. Is this okay, students? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this is how you will write the location. Now, how to write it in mathematical way? See, in physics we like mathematical way, right? So what's the mathematical way of writing it? So look, students, directly from the origin we draw a vector. This is a vector, yes, it has, so got it, we draw a vector, and this vector is called position vector. We write it with R. So OP vector, this is your OP vector, this is your O, this is your P. So this vector is OP vector, and I can write it as vector R. Okay, so the length of this vector OP is equal to R. So see, I am writing magnitude equal to magnitude, vector equal to vector. So you need to understand this thing, students. If you are writing magnitude on the other side, then magnitude also on the other side, then only two things will be equal. Equal means what? Exactly same.
So if you write OP equals to R, that will be wrong. Why? Why this is wrong? Because you have vector on this side and you have only magnitude on this side. So that's wrong. So if you are writing vector, write vector on both sides. If you are writing magnitude, magnitude on both sides. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. So you have this length x, this length y, and this length r. Right angle triangle. Yes. And now you want to write the position vector. So this is, see, if you're writing in terms of magnitude, then r square is equals to x square plus y square. Am I right? Yes. But if we want to write in terms of magnitude, in terms of vector, then position vector r, how will you write it, this position vector r? So here also there should be vector, right? Only vector equals to vector. Yes or no? Vector. Yes, sir. Equals to means, students, exactly same, okay? Just like we have congruent triangles, you put one over the another, doesn't matter. Okay, so students, how do we reach this location? I want to tell you this location. So this was my location, so how to reach this location? Tell me, simple way. I have to move x units in this direction and then y units in a vertical direction. Am I right or not? Yes, sir. Yes. Yes, sir. So this r vector, to reach here, I have to move x units in x direction. So x is the magnitude, you can see this is the magnitude. Now multiply this with the direction. So how do we use? We use unit vectors. What do you use, students? Unit vector. Unit vector. See, unit circle. Unit circle means radius is equals to 1 of the circle. Now unit vector means the vector which has magnitude 1. So those vectors are unit vectors whose magnitude is 1. Is this clear? Yes, sir. Now unit vector in x direction whose magnitude is 1. There is a special name for unit vector. Unit vector in x direction, we write it I and then put a hat on the I, or put a cap I on cap. the I. So that's I hat, I cap. So that's the unit vector that we use to tell the direction along the x-axis. Now we have a vector vertically in the vertical direction along the y-axis. J cap, J hat. How do we call it? J hat. J hat, J cap. So students, two kind of vectors are there. One is the general vector on which we put an arrow, and second one is the vector on which we put the hat. So hat means vector whose magnitude is 1. They are unit vectors. So we are differentiating unit vectors versus other vectors. So if the magnitude is 1, we will put a hat on it. If the magnitude is other than 1, then put an arrow. Is this clear? Yes, sir. So these are unit vectors. Now let us use the unit vector. So you are moving x units in which direction? X direction. Now you are moving y units in which direction? By direction. J cap. Direction. J cap. So that's how we write the location of, position of vector r. So vector r is equals to, so see, magnitude multiply direction. So it has become a vector plus magnitude
multiply direction. So vector plus vector is equal to vector. Sir, for second vector we use j cap. Yes, beta. See, If we have two vectors, so we use I cap and j cap. okay. See what we are discussing it. Let me tell the concept again. You have a particle P at this location xy, okay, in the xy plane. This is x-axis, this is y-axis. Yes, there is a particle. So this P is a particle and it is at this location xy. So what does this mean? It means we need to move along the x-axis x units, and then in the y direction y units Yes, sir. to reach this point. There is another way also to reach this point, directly from O to P. That is distance r, and there is this angle theta. Yes, so move r in the direction theta. Is it okay? Yes, sir. So now to reach this particle, this position vector r. So this is one way of reaching this point, vector r. So what is another way of reaching this point? Move x units in x direction Yes, sir. and then move y units along y axis or in y direction. Yes. sir. Yes. So how do we write it mathematically? How do we write it mathematically? So this position vector, to reach this point, move x units in which direction? X direction. X direction. So x direction is told by unit vector in the x direction. So I cap is the unit vector in the direction x along x axis, and we have j Okay, sir. cap is the unit vector to tell the direction in the y axis. So I move this, and now I will be moving this here. So moving y units in the y Along direction. X direction. So that's simple as that. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, so this is mathematical way of writing this whole story. How to reach point P? Tell me. There are two ways. This is the first way, that along this angle theta, this position vector r. So when I am writing here r, it means its magnitude is equals to r. And what will be the direction? Direction is, we can give the direction by tan theta. So tan theta is equals to y by x. So it has both the things. This r has magnitude and direction. This is also a vector. It also has both the things. Its magnitude is equals to x and its direction is along the x-axis, because this I cap is telling you the direction. This is again a vector. Its magnitude is equals to y units and its Yes, sir. direction is along y-axis. Yes. So a vector is equal to vector plus vector. Now let us talk in terms of magnitude. Students, whenever we are dealing with trigonometry, we will deal with only magnitudes. Remember this thing. Trigonometry means only magnitude. Or second thing, Pythagoras theorem.
So Pythagoras theorem, hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square. There also we will be dealing with only magnitude. So students, you will be dealing with three things: trigonometry, Pythagoras theorem, and third thing is the vectors. So when we are dealing vectors, then vector equal to vector. When we are dealing with trigonometry, only magnitude. When we are dealing with Pythagoras, only magnitude. Is this clear? This is what you have studied till class 10th. Trigonometry, there was no vector thing. Pythagoras, no vector thing. Is this clear? Yes. Yes, sir. Any problems? No, sir. Now what is this magnitude equal to direction I have told? What is this R equals to? Magnitude. Magnitude deal of with only magnitude. This is x, this is y, this is r. So r square is equals to x square plus y square. Y square. So r is equals to under the root x square plus y square. So that's the magnitude. So students, write it down with complete understanding. Is this okay? Yes, sir. yes, sir. So now if we so students, writing this vector again, can we write it like this? This is, suppose this was your xi cap, this vector is your yj cap, and this vector is your r vector. Any problem, students? No, sir. Can you see that this is a triangle? Can you see that this is a triangle? Yes, sir. Which geometric figure is it? Triangle. A triangle. Yes. This is a triangle. So we call it triangle method of vector addition. What do we call it? See, you have added two vectors, xi cap plus yj cap, and you get the resultant r cap. Can we write them like this? Can we write it like this is vector A and this vector B? You want to add these two vectors. So what will be the resultant? This will be the resultant vector R. So we can write it as R is equals to vector A plus vector B. Is it okay, students? Yes, sir. See, xi cap I have written as A vector, yj cap I have written as vector B, and this R as capital R. So this is how I have added two vectors. Any problem, students?
Yes. Shall we move forward? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, this is a vector A. So I started from this point. So this is tail of the vector. This is head of the vector. This arrowhead, head of the vector. Okay. Now I am joining another vector. This is the tail of vector B and this is the head of vector T. So I am joining head to tail. How I am joining? Head, I am joining the head of vector A, To tail. head of vector A to tail of vector B. This is vector B. So this is the tail of vector B. Yes. This is what I have done. This is what I have done here. Yes, this is what I have done here. So I am joining head to tail. So what will be the addition of these two vectors? This resultant R, R vector. and that is equals to A plus V. Got it, students? Yes, sir. Yes, sir. Now, Sir, please tell this again. yes, Sir, please tell this head of A vector and see, you tail have of a B ray. vector. This is your ray. We represent the vector with ray. So इसमें ray में it has two things. One is the tail and this is head. So this is vector, this is head of the vector, and this is tail of the vector. Okay. Okay, sir. Now, so this is vector A, this vector B, and this is the resultant of these vectors. So there are two ways to reach this point P. One way is this A, vector A plus then this magnitude and direction, or this vector R directly from here to here. So this is triangular law of vector addition. What is this? Triangular law of Triangular law. Is this clear to everyone, students? Yes, sir. Yes, sir. Now these vectors are free vectors. Okay, we can move them anywhere without changing their magnitude and without changing their direction. Is this clear? So if I have vector A over here, this is my vector A. Okay, this is my vector A, and I have placed this vector, I have moved this vector B from the head to the tail. Now I am joining their tails. Here I have joined head to tail. How I have joined? Head of A to tail of B. So head to tail. Right? Head of A to tail of B. So head to tail joining. So how was the joining? From head to tail. Now here what I have done? Joining by tails. See, vector B is a free vector. Yes? Free vector. Free vector means they are free to move. Okay? So vector B is a free vector.
and I have moved this vector b from here to here. Any problem, students? Yes? No, sir. Sir, please explain it again. बेटा सी ये वेक्टर b है, ये फ्री वेक्टर है, मैं इसको कहीं भी लेके जा सकता हूँ, चाहे मैं यहाँ लेके जाऊँ, चाहे यहाँ लेकर जाऊँ, चाहे यहाँ लेकर जाऊँ, बस इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए. सारे वेक्टर b हैं. I can take them anywhere in this world. They are free vectors. ऐसे तो हम ए को भी ले जा सकते हैं. Yes, ऊपर A को भी भी ले जाओ, कौन रोकता आपको? ले जाओ, लो A को भी ले जाओ, बिल्कुल कोई A को nobody is भी- stopping you. लेकिन अब आपको मैंने कहा आप पैदल चल के कहीं भी जा सकते हैं, तो क्या आप एमलेसली इधर से उधर घूमने लगेंगे या किसी एम के साथ जाएंगे इधर से उधर? एम के साथ. बस. तो फ्री वेक्टर जा कहीं भी सकता है, लेकिन जहां उसका उद्देश्य होगा, जहां टारगेट होगा, वहीं तो जाएगा. अब उसका टारगेट था, पहले टारगेट था उसका कि ए के हेड पे ज्वाइन करना. अब उसका टारगेट है कि ए की टेल पे ज्वाइन करना. दो ही जगह ज्वाइनिंग हो सकती है, या तो हेड पे होगी या टेल पे होगी. राइट. आर वहीं का वहीं है जहां पहले था. आर वहीं का वहीं है जहां पहले था. समझ रहे ना बेटे? यस सर. यस सर. आर वहीं का वहीं है. तो बी पहले कहां था? यहां था ना. अब वो यहां से यहां आ गया. यस सर. पहले बी यहां था, अब वो यहां से यहां आ गया. ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है. रेक्टेंगल हो गया ना ये. और आप ए Yes. को नीचे से यहां लेके जाना चाहते हो, यहां भी लेके जा सकते हो. तो दिस आल्सो ए यूनिट. इज दिस क्लियर? यस सर. यस सर. तो स्टूडेंट्स, ये जो आपका एक रेक्टेंगल बन गया, यस. और रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम की टाइप है ना. रेक्टेंगल इज अ टाइप ऑफ Parallelogram. पैरेललोग्राम. सो वी कॉल इट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. अगर आपने किससे ज्वाइनिंग की? टेल Tail to tail. तो जो रिजल्टेंट आएगा वो पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा. क्या होगा? पैरेललोग्राम. Diagonal of parallel. हाइपोटेन्यूज है ना. यहाँ पे क्या था? हाइपोटेन्यूज था ये. और यहाँ क्या हो गया? डायगोनल. अगर राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं तो. आई बात समझ में स्टूडेंट्स? यस सर. तो यहां जो था, ये आपका जो आर था, डेट वाज थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल. क्या था ये? थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल. साइड ऑफ ट्रायंगल. लिख लो, लिख लो. थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल लिख लो. जब आपने कैसे ज्वाइन किया था? Head to tail. हेड टू टेल. तो थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल आपका रिजल्टेंट आया. अब आपने कैसे ज्वाइन किया है? Tail to tail. दोनों Tail की to टेल्स ज्वाइन कर दी. तो आपका रिजल्टेंट क्या आया है? ये जो आपका रिजल्टेंट आया आर, ये क्या है आपका? Diagonal of- डायगोनल. डायगोनल ऑफ parallelogram. पैरेललोग्राम. देखो बात वही है, आंसर भी वही है, सब कुछ वही है. बस एक ही बात को कहने के दो ढंग हैं, बस, और कुछ नहीं है. Excuse me, sir. हाँ बेटा. And sir, if we join these arrows tail by tail, then what will be the resultant? वे टेल बाय टेल ज्वाइन कर रखा है. ये दोनों की टेल्स ज्वाइन कर रखी हैं. आप क्या करें? दोनों के हेड ज्वाइन कर दें. Yes, sir. Head by head. ओके. तो हेड कैसे ज्वाइन करें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. चलो, ये ए है, ये फ्री वेक्टर है, इसको मैं यहां ले आया ए को. और ये बी फ्री वेक्टर है, बी को मैं यहां ले आया इसके नीचे ए के. ठीक है? ला Yes, सकता हूं sir. ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया. ये वेक्टर ए और है, थर्ड साइड बन जाएगा. ये वेक्टर बी है. अब ध्यान सुनिए, इससे एडिशन नहीं होगी, क्योंकि एडिशन के दो ही लॉ हैं.
पहला ट्रायंगल लॉ और दूसरा पैरेललोग्राम लॉ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि ये तीसरा केस हो सकता है, लेकिन इससे एडिशन नहीं होगी। या तो मुझे बी को ए के टेल पे लाना पड़ेगा या हेड पे लाना पड़ेगा। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन स्टूडेंट्स। तो मुझे ये जो केस 3 है, इस तरीके से मैं रिजल्टेंट नहीं निकाल सकता, कभी भी गलत हो जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको केस 3 को या तो केस 1 में चेंज करूं या केस 2 में चेंज करूं। तो हम वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? वेक्टर अलजेब्रा। हमने देखा कि वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं। एक हेड, एक जो ये मैग्नीट्यूड है, एक स्केल होगा इसका, और ये जो एरो है, जो हेड है, ये मेरे को डायरेक्शन बताएगा। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, तो इससे वेक्टर डिनोट करते हैं हम। और दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं? अगर दो वेक्टर ऐड करना हो तो या तो हेड टू टेल ज्वाइन करेंगे या फिर टेल टू टेल। लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अगर हमें ऐसी सिचुएशन मिल जाए कि दोनों फोर्सेस एक पॉइंट पे लग रही है तो क्या करें सर हम? तो आप उसको दोनों को या तो हेड टू टेल ज्वाइन कर दीजिए या टेल टू टेल ज्वाइन कर दीजिए, तो आपको रिजल्टेंट फोर्स पता लग जाएगी। सबकी समझ में बात आई? ये बहुत, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सिनेरियो। आपको ऐसा सिनेरियो मिलेगा कि एक मेरा बॉक्स है और एक आदमी इधर से फोर्स लगा रहा है, एक आदमी इधर से फोर्स लगा रहा है। तो दिस इज फोर्स F1 एंड दिस फोर्स F2। तो आप क्या करेंगे बेटा, इस F2 को, ये फ्री वेक्टर, इसको यहां ले जाइए। इज दिस क्लियर? हेड टू टेल ज्वाइन कर दिया तो ये क्या आ गया आपका? रिजल्टेंट। अरे थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल आएगा ना भाई? Yes. यस सर। रिजल्टेंट, अब ये भी फ्री वेक्टर है तो अब यहां तो जाएगा नहीं ऑब्वियसली। ये जो रिजल्टेंट आया ना, इसको यहां ले जाओ, यहां जहां फोर्स लग रही थी, ये इस डायरेक्शन में जाएगा अब आपका बॉक्स, इस डायरेक्शन में। तो R इज इक्वल टू F1 प्लस F2। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा स्टूडेंट्स, इसीलिए आपके क्वेश्चंस पूछना जरूरी है। जितने क्वेश्चंस आप पूछेंगे उतनी फिजिक्स सीखेंगे, याद रखना मेरी बात। क्वेश्चन कोई भी, हर क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है। एक भी क्वेश्चन मैंने ऐसा नहीं सुना स्टूडेंट से जो गलत हो या मतलब ठीक ना हो सकता है दूसरे बच्चे को लगे यार ये इसने क्या क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि क्रिएटिव माइंड्स के दिमाग में क्वेश्चन आते हैं, तो आप क्वेश्चन जरूर पूछें। तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपका रिजल्टेंट। तो देखा आपकी फोर्स F1 ये थी और F2 ये थी, और रिजल्टेंट ये होगा। क्यों? F2 यहाँ से यहाँ चला गया और ट्रायंगल लॉ से हमारा रिजल्टेंट निकल गया, और ये रिजल्टेंट फ्री वेक्टर है। तो ऑब्वियसली जब जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही थी वहीं पर ही हम वेक्टर R बनाएंगे। चलिए, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप सीख रहे हैं। मैं इसको दोबारा बनाता हूँ एक बार। क्वेश्चन था कि ये मेरा एक बॉक्स है, एक फोर्स इधर लग रही है 4 न्यूटन स्टूडेंट्स, और इधर से फोर्स लग रही है 3 न्यूटन। इसको थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा, 3 न्यूटन बना रहे, क्योंकि मैग्नीट्यूड अगर इतना 4 है तो इससे थोड़ा छोटा होना चाहिए 3 न्यूटन। ये डायरेक्शन है। और स्टूडेंट्स मेरे से पूछा कि अब जो ये मेरा बॉक्स है ये किस तरफ जाएगा। ये एक प्लेन है मेरा, XY प्लेन, और दो बच्चे हैं, दोनों मिलकर फोर्स लगा रहे हैं। वो कह रहा है नहीं मैं इसको इधर लेके जाऊंगा, वो कह रहा है नहीं मैं इसको इधर लेके जाऊंगा। तो स्टूडेंट्स इधर फोर्स लग रही है 4 न्यूटन, ये फ्री वेक्टर, मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, ठीक है। तो इसका मैं एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। इस बॉडी को मैं इस पॉइंट से, इसका जो सेंटर है उसको यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, और इधर फोर्स लगा दी 4 न्यूटन। और स्टूडेंट्स इस बच्चे ने इधर फोर्स लगा दी 3 न्यूटन। तो आप मुझे बताओ, आपकी मर्जी थी, आप इसको ट्रायंगल बनाना चाहते हैं ट्रायंगल बना लेते हैं। जैसे 3 न्यूटन आप यहाँ ले आए तो ये 4 न्यूटन यहाँ थी, तो आपने ट्रायंगल बना दिया, तो फोर्स कितनी आ गई? 5 न्यूटन। हाइपोटेन्यूज आ गया ना, ये 4 ये 3, राइट। और यहाँ पर ये आपका पैरेललोग्राम बनेगा। तो बेटर है आप टेल्स ज्वाइन करें। क्या ज्वाइन करें? बेटर क्या है? टेल्स, क्योंकि उससे आपको रिजल्टेंट जो है वो यही मिल जाएगा डायरेक्ट डायगोनल। तो दैट इज 5 न्यूटन। तो ये भी फ्री वेक्टर है, इसको भी आप यहीं ले आओ, दैट इज 5 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स देखा आपने, जो बॉक्स है वो आपने 3 न्यूटन फोर्स लगाई एक बच्चे ने
दूसरे बच्चे ने लगाई 4 न्यूटन, लेकिन इसका रिजल्टेंट 5 न्यूटन नहीं बना। इसका रिजल्टेंट 7 न्यूटन नहीं बना। इसका जो रिजल्टेंट है F1 प्लस F2, क्योंकि मैग्नीट्यूड इस तरीके से डायरेक्ट ऐड नहीं होते। ये अब आप समझ गए होंगे कि 5 न्यूटन फोर्स प्लस 4 न्यूटन फोर्स प्लस 3 न्यूटन फोर्स, अगर ये दोनों एक डायरेक्शन में लगते हैं स्टूडेंट्स, ये 5 न्यूटन, सॉरी 5 बोल रहा हूँ रिजल्टेंट बार बार मैं, ये 4 न्यूटन और ये 3 न्यूटन, तो रिजल्टेंट हो जाता मेरा 7 न्यूटन, तो हो जाता 7 न्यूटन। लेकिन ध्यान से समझेंगे, अगर यही बॉक्स है, एक बच्चा इधर फोर्स लगा रहा है 4 न्यूटन और दूसरा बच्चा इधर फोर्स लगा रहा है 3 न्यूटन, तो रिजल्टेंट क्या होगा? 1 न्यूटन। यस, ये तो सबको पता ही है। यस Yes. सर। है कि नहीं? तो अगर इधर 3 न्यूटन है तो रिजल्टेंट है इस डायरेक्शन में 1 न्यूटन। तो मैक्सिमम फोर्स क्या हो सकती है? अगर उनके बीच में एंगल 0 डिग्री है तो मैक्सिमम फोर्स लगेगी, थीटा इज 0। उनके बीच में अगर एंगल है 180 डिग्री, यहां कितना एंगल है दोनों के बीच में? 180 डिग्री। 180 डिग्री। फोर्स लगेगी। तो मैक्सिमम फोर्स मींस उनके मैग्नीट्यूड ऐड कर दो, ऐड मैग्नीट्यूड्स, और थीटा अगर 180 है तो सब्ट्रैक्ट मैग्नीट्यूड्स, तो जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड मिलेगा आपको, और जो ज्यादा वाले की डायरेक्शन है वो डायरेक्शन। क्लियर हो गई बात? लेकिन अगर एंगल 0 से 180 के बीच में है तो आपकी जो फोर्स है वो 7 न्यूटन और 1 न्यूटन, ये जो मैक्सिमम थी आपकी और ये जो मिनिमम है आपका, अगर थीटा जो है वो आपका 0 और 180 के बीच में है तो जो आपकी फोर्स लगेगी, रिजल्टेंट फोर्स, वो लगेगी 1 न्यूटन और 7 न्यूटन के बीच में। ओके सर। तो अब आप समझ गए होंगे स्केलर क्वांटिटीज को ऐड करने में और वेक्टर्स में कितना डिफरेंस है। यानी कि स्केलर और वेक्टर को अगर आपको ऐड करना है तो उनके बीच में जो एंगल है, जैसे यहाँ 90 था, अगर इस एंगल को मैं चेंज कर दूंगा, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको स्टूडेंट्स, अगर ये सपोज 4 न्यूटन है और ये भी 4 न्यूटन है, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था आज, अगर इनके बीच में एंगल 120 डिग्री है, कितना है? 120। तो ये जो आपका जो रिजल्टेंट बनेगा ये 4 न्यूटन आएगा, एंड इट इज इन द मिडल। 120 डिग्री। समझे मेरी बात? यस सर। ये नोट कर लो आप, जहां से आज हमने अपनी क्लास शुरू की थी कि 2 टग बोट्स हैं, इस शिप को शुरू कर रही हैं, इस शिप को खींच रही हैं, और ये फोर्स लगा रही है सपोज 10⁻³ न्यूटन, और ये फोर्स लगा रही है 10⁻³ न्यूटन, तो इनका रिजल्टेंट कहां होगा? ये कहां जाएगा शिप? ये In the middle। बीच में, सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में जाएगा। और कितनी फोर्स लगेगी? क्योंकि ये आपका पैरेललोग्राम बन जाएगा, और ये पैरेललोग्राम कैसा पैरेललोग्राम है? जिसकी 2 साइड ये ऐसे मीट कर रही हैं, तो दोनों इक्वल साइड्स हैं, समझ रहे हैं? तो यस सर। ये जो आपका आएगा यहाँ पे, ये आएगा 4 न्यूटन, सॉरी मतलब 10⁻³ न्यूटन। तो ये था एक स्पेशल केस कि अगर एंगल कितना है 120 डिग्री। तो देखा आपने, अगर 120 डिग्री, अगर ये एंगल मैं 120 बना दूं और दोनों फोर्सेस अगर सेम है, ये 4 न्यूटन और ये 4 न्यूटन, ये एक बॉक्स पे 2 बच्चे फोर्स लगा रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में लगा रहा है 4 न्यूटन और ये इस डायरेक्शन में लगा रहा है 4 न्यूटन, तो बॉक्स किस डायरेक्शन में जाएगा? बना दो इनका डायगोनल, सर डायगोनल बना दो, पैरेललोग्राम बना दो, ये बन गया पैरेललोग्राम, और ये होगा इस डायरेक्शन में बॉक्स जाएगा 4 न्यूटन। सर सॉरी हाँ सर, जब वो बॉक्स जब 120 डिग्री ये एंगल जा से, रहा है, मैं इधर फोर्स लगा रहा हूँ, ये बच्चा इधर फोर्स लगा रहा है, तो बिल्कुल ठीक है, इधर ही फोर्स ये जाएगा 4 न्यूटन। लेकिन ये स्पेशल केस सिर्फ तभी है जब 120 डिग्री एंगल और दोनों फोर्सेस सेम है। एक्सक्यूज मी सर, यस सर व्हेन वी यूज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यस तो सर इसमें
हम डायगोनल फॉर्मूला लगाएंगे, हम जिस फॉर्मूले से हम डायगोनल को फाइंड आउट करते हैं पैरेललोग्राम बिल्कुल में। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बात कही बेटा आपने, बहुत ही अच्छी बात कही, बहुत ही बढ़िया कि उसकी लेंथ निकालने के लिए, उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें पैरेललोग्राम की डायगोनल की लेंथ निकालनी पड़ेगी और वही होगा उसका मैग्नीट्यूड। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो इस केस के अंदर आप देखोगे ये जो ट्रायंगल हमारा बना है, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है, इसलिए ये भी 10⁻³ है, ये भी 10⁻³ और ये भी 10⁻³ बहुत अच्छी बात कही बेटा आपने। तो दोनों Excuse me, इक्विलेटरल sir. ट्रायंगल ऊपर भी और नीचे भी, तो इसीलिए 120 को आपने डिवाइड किया था 60 ऊपर 60 नीचे, और इसीलिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, इसलिए ये साइड भी बनी 3 न्यूटन। तो मतलब जो भी 10⁻³ न्यूटन थी तो 10⁻³ न्यूटन। तो ये बात आज हम इसी बात पे खत्म करते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ में हमें जो है, अब हमें कल हम सीखेंगे कि पैरेललोग्राम की लेंथ कैसे निकालते हैं। एक पैरेललोग्राम है, उसके डायगोनल की लेंथ का फार्मूला क्या है, जो हमने आज तक नहीं किया, हम इसको कल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से आपकी शुरुआत हो गई है और आप इसका वीडियो देख सकते हैं, मैं इसको अपलोड कर दूंगा और पीछे के भी दोनों वीडियो ज़रूर देखें। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। Thank you, sir. Thank you, sir.